hello. Hello, my dear students. Let's get started in few seconds. I think streaming start हुई है कि नहीं, I don't know. If you can see me, hear me, give me a thumbs up so that I can know. Can you see me, hear me, my dear students? Can you see me, hear me? Are you able to see the board here? If you're not part of this, join कर लीजिए इसको join कर लीजिए. If you're not part of this channel, join this channel right now. Today we are going to talk about PYQs. Hello Devansh, hello Priyanshu, regular students. Drupad, hello. है ना, क्लास नहीं मिस करनी है कोई भी. But today there are back-to-back two classes. क्या बात है, भगवान ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है ना प्रीतिपुरी? वुड यू एग्री नीलू सिंह? आज दो क्लासें हैं, एक नहीं दो क्लास. एक अभी और एक 6 बजे. 6 बजे वी आर ऑफिशियली स्टार्टिंग द एनएससीपी की थ्योरी क्लासेस. यू हैव बीन आस्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. Congratulations, we are starting it today right now. And I was planning कि भाई जब ये फिजिक्स ओलंपियाड फिजिक्स एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा, I will start the classes after that. But बच्चे कहाँ मानते हैं यार. Every day I was getting so many messages, भाई सर कब स्टार्ट करोगे, कर दो स्टार्ट, अब तो स्टार्ट कर दो सर. And then I gave up. I said, no, today is Baisakhi, today is special day, and today is officially 10 years of Vedantu. Hannah, so big cheers to Vedantu. We completed 10 years officially today. We were started in the year 2014 on 13th of uh, April. Chaliye, happy Vaisakhi everybody. Chaliye. Let's get started here. So first of all, board exam फोड़ने का इरादा पक्का है. I'm very sure, है ना, very sure. So my name is Bhavdeep Sethi. I am masters from IIT Bombay. I convert physics haters into physics lovers, and I always say physics को रट्टा मारोगे तो physics बुरा मान जाएगी. अगर physics बुरा मान गई फिर तो बात नहीं बननी, है ना संजीव? Would you agree with me on that? So today we are going to do marathon on optics, and this is an accelerated physics obviously. So accelerated physics क्या है? It is to quickly cover the CBSE का syllabus. Because once you finish that, you can go to that next level where you can say, I'm going to prepare for Olympiads, JEE और NEET. क्योंकि अगर ये टारगेट कर रहे हो तो महीने महीने लगाकर CBSE 10th करने से नहीं बात बनने वाली. You really have to go to the level of board exam within next 1 month or so. And for that reason, we started this series called Accelerated Maths and also Accelerated Physics. Now, in a nutshell, there's going to be one chapter in one YT session for 4 chapters in 4 sessions. But then there are 2 extra PYQ sessions, like today is a PYQ session. And then free for all, no cash, no hidden fee, no terms and conditions, theory, practice problems, PYQs, homework after each question. This is the schedule. Today I had to change it क्योंकि 6 बजे अभय सर बोले मेरी क्लास है, तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं 5 बजे कर लेता हूँ. So this was the original schedule, but Abhay sir has a session today at 6, and I didn't want to clash because see the point is many of the students come to this class and also Abhay sir class, तो दोनों क्लास अटेंड करने का मौका मिल जाए. That was the whole purpose of changing this, है ना. So today we are going to have at 5 o'clock. अगली बार फिर 6 बजे ही मिलेंगे. So take a pledge, no memorization. No memorization. I am not going to memorize ever in my life. Physics हो, maths हो और बाकी subjects के लिए भी. Please everybody take a pledge and give me a thumbs up once you have taken that. Class उसके बाद ही शुरू होगी. And anybody who does not want to take this pledge, you have to leave the class because आपको समझ में नहीं आएगा कुछ. I'm not being rude here, I'm being honest here. If you find difficulty in taking this pledge, then you're going to be super bored in the class क्योंकि याद करने के लिए तो मैं कुछ दूंगा ही नहीं. देवांश बेटा मुझे पता नहीं,
उनका कोई तो सेशन है 6 बजे इसी चैनल पर, आप स्केड्यूल में देख लीजिए। तो उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा मेरा सेशन है, मैंने ठीक है जी, मैं 5 बजे मैं पहले ले लेता हूँ, है ना। नेवर मेमोराइज, नेवर, कैटास्ट्रॉफिक, ध्रुपद, प्रियांशु। चलिए, so today's agenda is very simple. PYQs on reflection and refraction. Let's go directly into the questions right now. So 1 mark question करेंगे। देखो, वही मैं कहता हूँ यार, do you really think physics is in textbooks? Look at this beautiful, you know, picture out there. This is physics. This is physics, yeah. And so the laws of reflection hold true for, this was a 1 mark question in PYQs. It holds true for plane mirrors only, concave mirrors, convex or all reflecting surfaces. क्या बोलते हो आप? Catastrophic, reveal your name, प्रियांशु बोलता है ना। बताइए जी, the laws of reflection hold good for, हाँ जी बताइए, फटाफट से ABCD लिख दीजिए so that I can know भाई भाई आपको कॉन्सेप्ट आता है ना। So this is Dhrupad says, the answer is D. Preeti Puri agrees with Dhrupad. And Priyanshu says, yo, Devansh, everybody. Yes, it's good for all the reflecting surfaces because it's the law of nature, laws of nature, except the Ohm's law. Ohm's law तो फर्जी लॉ है भाई। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़े हम देखेंगे Ohm's law is a फर्जी लॉ, कोई नहीं मानता उसको। But other than that, everybody will follow the laws of nature. It is D, all reflecting surfaces. Write down 4 important characteristics of image formed by a plane mirror. 2014 में 1 मार्क का क्वेश्चन था सिर्फ ये, है ना। अब आप देखिए बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड में देयर आर 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क क्वेश्चंस, एंड समटाइम्स इन 1 मार्क दे गिव दिस लाइक 4 important characteristics. अभी 1 मार्क में लगता है ना एक वर्ड लिखना है, बट नहीं, समटाइम्स यू हैव टू राइट मोर देन दैट, है ना। सो व्हाट डू यू थिंक? राइट डाउन द 4 important characteristics. बताइए, कैटास्ट्रॉफिक, संजीव, Priyanshu, what do you think? हाँ जी बताइए बताइए, 4 important characteristics. Lateral inversion, संजीव ने बोला, ठीक है जी, और बताइए। बहुत सही जा रहे हो, सही जा रहे हो भाई, और बताइए, है ना। Erect, same size, yes, ध्रुपद, संजीव, yes, yes, है ना। So you can write image is virtual. First of all, it's virtual because it's behind the mirror. Virtually है, virtual world है, इसके पीछे थोड़ी कुछ है। और उसके बाद erect है, अगर आप सीधे खड़े हो तो इमेज योगा नहीं करने वाली। Laterally inverted, दायां हाथ बायां, बायां हाथ दायां, so your right hand becomes left hand, left hand becomes right hand, and of same size as object. अगर आपकी हाइट 5 feet 5 inches है तो 5 5 ही रहने वाली हो, ज्यादा कम नहीं होने वाली। बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। Now give 2 uses of a convex lens. All India 2016, 1 mark question. 2 important uses of a convex lens. So there are a lot of uses. I mean, you can choose any of those. So basically you can use any of them, like spectacles, है ना। ये कौन से हैं? ये तो कॉनकेव हैं भाई, ये तो मेरे को तो मायोपिया है। बट दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, यूजुअली ओल्ड एज में हाइपरमेट्रोपिया होता है। यूजुअली इट्स नॉट a rule or a law, obviously. So in those cases you use convex lens, and convex lenses are the ones which will magnify things. So spectacles, telescopes, microscopes, camera, है ना। रियर व्यू मिरर, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है प्यारे बच्चे, संजीव। हाँ, वो ये लेंस की बात हो रही है। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेड मिस्टेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा हूँ, मोस्ट कॉमनली मेड मिस्टेक्स। रिमेंबर, कॉनकेव वर्सेस कॉन्वेक्स, मिरर वर्सेस लेंस, फोकल लेंथ वर्सेस आर, एंड नॉट राइटिंग द यूनिट फॉर द आंसर, है ना। नहीं नहीं नहीं, कैटास्ट्रोफिक एंड संजीव, वी आर टॉकिंग अबाउट लेंस हियर। वो गाड़ी में जो होता है, कार में, दैट इज अ मिरर, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंस। सो अगेन, लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स। आपके दीदी भैया जब एग्जाम देकर निकले तो वी टॉक टू द स्टूडेंट्स, वी इंटरव्यू देम, भाई कैसा हुआ एग्जाम। See, there are many reasons to do that. Firstly, we want to make sure that they have done good. Secondly, we want to collect whatever mistakes they made so that we can pass on those mistakes to junior other students, the next generation.
But third very important reason for that is कि what if they did not perform good? So then I really want to talk to them and I want to ensure कि भाई उनको confidence lose ना हो जाए life में यार. है ना, that happens if somebody performs poor, then the person might lose confidence, and we really want to give them counseling कि यार ये कोई बात नहीं यार, एक एग्जाम ही तो था यार, है ना. चलिए, कॉनकेव वर्सेस कॉन्वेक्स, ये सबसे बड़ी गलती एक और होती है. एक तो ये होता है कि मिरर और लेंस को इंटरचेंजेबली पढ़ लिया. गुड इवनिंग शाश्वत बेटा, है ना. कॉनकेव को कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स को कॉनकेव पढ़ लिया, बहुत बड़ी गलती होती है. नाउ डिफाइन द टर्म रिफ्लेक्शन. सीबीएसई 2016 में 1 मार्क का क्वेश्चन था. सो डिफाइन द टर्म रिफ्लेक्शन. So what would you say is reflection? है ना. So total I have 20 or 22 questions today. अभी 1 मार्क है, थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, और जहां रिक्वायर्ड होगा सारे स्टेप्स हम देखेंगे उसके. So the bouncing back of a ray of light in the same medium after striking a surface of an object is called reflection. Do not use the word mirror and all that. मिरर वगैरह नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि रिफ्लेक्शन जरूरी थोड़ी मिरर से हो यार. इस बुक में से, टेबल में से टकरा के जब लाइट आ रही है, दैट इज रिफ्लेक्शन. ठीक है. Okay. So reflection is bouncing back of a light in the same medium. Same medium लिखना है आपने. You know, after striking on a surface of an object, that's called reflection. Now state the laws of reflection. All India 2010 में पूछा गया question. State the laws of reflection. So answer is basically the incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incidence. ये इसको एक मिनट में पेन लेकर आता हूँ so that I can also write here. And some students requested me to have a black background or white background. Today I'm trying white, but I think white में थोड़ा सा brightness कुछ ज़्यादा ही लग रही है. So we'll see. You know, the incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incidence. ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि normal तो कहीं भी हो सकती है ना यार. But we are talking about that particular normal, which is at the point of incidence. है ना? They are always in the same plane. An angle of incidence is equal to angle of reflection. है ना. थोड़ी सी brightness चाहे मैं कम ही कर दूं इसकी, तो better लगने वाला है शायद, पर मैं ना काला हो जाऊं फिर. सांवला. हाँ, चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं. So CBSE 2015 का पेपर, it says how many images are formed by two parallel mirrors. Two parallel mirrors एक दूसरे के सामने ऐसे रख दिए. So what is the number of image that you can expect? There are two parallel mirrors. हाँ जी बताइए. What is the number of images formed by two parallel mirrors? दो mirrors हैं, parallel रख दिए एक दूसरे के. It is infinite, like Drupad and Devant say, it is infinite many. And there will be infinite many images formed by two parallel plane mirrors. क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो भाई, सही जा रहे हो, है ना. चलिए अगला सवाल, है ना. These are all PYQs. So this is from 2011. So the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? They have not told us whether it is concave or convex. So for that reason, we are not able to tell them whether it is plus or minus. All we can say is the focal length is radius of curvature divided by 2. So you 20 divide by 2, you get 10 centimeters. Now today we are doing back-to-back questions of PYQs because your concepts are already clear in reflection and refraction. You have to know what kind of questions are asked and how to frame your answers. So this is 1 mark question, so this is enough. You're just showing all the, so you're writing, so don't make a mistake of doing this. Many students say, "ये question पढ़ा और answer लिख दिया 10 centimeter." This will not give you full marks. You have to write the formula that you're using and then substitute the values and then you come up with the final answer. And do not forget to write centimeters. काफी students 10 लिख के आ जाते हैं. भाई जब उन्होंने 20 सेंटीमीटर दिया है तो उसका आधा 10 सेंटीमीटर आपको लिखना पड़ेगा. चलिए आगे चलते हैं. Light enters from air to glass having refractive index 1.5.
what is the speed of light in glass? Speed of light in air is 3 times 10 to the power 8 meter per second. Now this was in 2011 paper, again still 1 mark, so you have to still write the formula. You will say refractive index of glass is equal to the speed of light in vacuum divided by speed of light in glass. Then you start substituting the values. You say 1.5, हाँ ये क्या हो गया, ठीक तो है, हाँ 1.5 is equal to 3 times 10 to the power 8, and then do not forget to write the unit meter per second divided by Vg. Vg ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, 2 times 10 to the power 8 meters per second. You have to write meters per second. क्लियर है यहाँ तक? गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग सो फार. यहाँ तक क्लियर है भाई? थम्स अप, थम्स डाउन, समथिंग आई शुड नो कि भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा. ठीक है, आगे चलते हैं. And this is how you write the answers. So again, look at the beautiful picture here. Don't you think this is physics? है ना, फिजिक्स ये थोड़ी कि रट्टा मार लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस इज फिजिक्स. लुक एट नेचर अराउंड यू. ये फिजिक्स है यार. If you can't see physics in this image, then probably it's my mistake as a teacher. I was not able to make you visualize physics here. क्योंकि अगर एक मैं अच्छा टीचर हूं तो मैं आपको इसमें इतना अच्छे से पढ़ा चुका हूंगा कि आपने ये इमेज देखी, आपको फिजिक्स दिखी और आपने कहा वाह क्या बात है यार, अति सुंदर, लाइक कैटास्ट्रोफिक सेज, है ना. आज सुपर सोचा तो मैंने था कि आज बहुत सारे वीक क्विज करूंगा, बट प्रॉब्लम क्या है कि वीक क्विज में टाइम ज्यादा लगता है, फिर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर पाते हैं, है ना. फिर वो थोड़ा फन फैक्टर जरूर रहता है उसमें, बट इफ यू वांट, या वी विल ओके नेक्स्ट टाइम जब हम इलेक्ट्रिसिटी शुरू कर रहे हैं, आई विल ब्रिंग सम वीक क्विज. चलिए नेक्स्ट वीक हम इलेक्ट्रिसिटी करेंगे. देवांश अपना डाउट लिख दो, अगर क्विक होगा तो आई विल डेफिनेटली टेक दैट बच्चे. So if the image formed by a convex lens is of the same size as that of the object, what is the position and nature of the image with respect to the lens? बताइए जी. 12 और 13 में लगातार कॉपी पेस्ट मार दिया उन्होंने. Does light follow the laws of reflection when it falls on book or table? Laws of reflection are always valid, Devansh, है ना. इट इज डजंट मैटर लाइट कहाँ फॉल करके जा रही है, रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस, डज नॉट मैटर एट ऑल. चलिए सर, सुपर्णा ने आर्यन छाबरा. अच्छा ये आर्यन छाबरा है. ओहो, तभी मैंने कहा ये शरारती बच्चा कौन है यहाँ पे. ओके, ये आर्यन छाबरा है. चलिए, पर मेरे को याद रह ही रहेगा, तो याद हो सकता है मेरे को ना रहे, है ना. तो I'll try my best. So if the image formed by a convex lens is of the same size as that of the object, तो हमको पता है, बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि if this is f, then first of all this is a lens. You have to remember that, and this is not 2, this is not c, this is 2f. So then you know basically what is going to happen. If you need same size image, the object would have been here, so that the image is here of the same size, real inverted, है ना. So it's all happening at 2f. Now this जान के मैंने इसको काट के लिखा है क्योंकि center of curvature, it's one of the most commonly made mistakes में आता है. सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिखना है, इसको 2f लिखना है. मैंने हाईलाइट करने के लिए जान के लिख के काट के फिर 2f लिखा है कि आपको बता सकूं, दिख जाए आपको. So the image will be real inverted and will be formed at this. अब इसमें एक और गलती होती है students. Again, the purpose of today class is not to teach you anything. You are already an expert in optics. But to know something and to be able to perform are two different things. ये गलती आप करोगे एग्जाम में, अगर नहीं है ना, तो इसलिए मैं समझा रहा हूं. एक गलती तो मैंने बताई सेंटर ऑफ कर्वेचर की. दूसरी एक बहुत बड़ी गलती होती है, आप ये देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द लेंस. ये कई बार इंप्लाई कर जाते हैं स्टूडेंट्स के, पूछा है कि भाई बराबर साइज की ऑब्जेक्ट चाहिए, इमेज चाहिए,
तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, वो दो अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे. वेयर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में आप लिखोगे कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट 2f. बट इधर पूछे इफ व्हाट इज द नेचर पोजीशन एंड एवरीथिंग अबाउट इमेज, तो आप इमेज के पर्सपेक्टिव में यहां लिखोगे, ऑब्जेक्ट के नहीं. सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर जब हम एनएसईपी के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कहाँ है. ठीक है. And by the way, again, for students who joined just now, congratulations. Today, first of all, it's Baisakhi. Secondly, we have completed 10 years. Vedantu is 10 years old now. So on occasion of that, I have started the series on NSEP की theory. So NSEP का boot camp start हो रहा, but that is in English medium channel, not here. So go to that channel at 6 p.m. and you will see that. Now, this one we are done. So name the type of lens that can be used as magnifying glass. 2011 में पूछा गया सवाल. Give reasons and draw a ray diagram to support your answer. क्योंकि now we are in 2-mark mode, so they are asking so much. Give reasons, draw a ray diagram to support your answer. तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे कि मैग्नीफाइड इमेज बने उससे? कहाँ पे रखोगे भाई? हाँ भाई, सबको हैप्पी वैसाखी है ना. सो यू विल पुट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट एंड यू विल ड्रॉ द रे डायग्राम लाइक दिस. इफ यू वांट वी कैन डू इट, है ना. एक एक फटाफट से बना लेते हैं कि भाई आप ऐसे एक लेंस बना लो, अति सुंदर अति सुंदर, एंड देन यू ड्रॉ दिस थिंगी, दैट दिस इज f, दिस इज 2f. सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है देखेंगे, अभी नहीं पता, जब टाइम आएगा तब देखेंगे. So now if you put the object here, what would happen is this goes, ये नहीं, this goes, है ना. लाइन टूल भी तो है, लाइन टूल यूज करिया जाए. हाँ, so this goes this way. ये white line आ गई. So this goes this way, है ना. Now if there's another ray of light that you can go make it go this way, so you will see they're diverging, and then you will go back dot 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 dot, and somewhere they meet. And that's the virtual erect image. ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, चलिए. Now question number 11 for 2 marks 2011 के पेपर में, what happens to a ray of light when it travels from one medium to another having equal refractive indices? Equal. And then they say state the cause of refraction of light. So see, when the light changes its speed, it will bend. So if the light changes the speed, it will bend. But if they are having equal refractive indices, then it doesn't bend. If a ray of light travels from one medium to another of same refractive index, then it will not bend. And the light travels in a straight line. Change in speed of light is the cause of refraction. You have to know that. So what is the cause of refraction? Refraction is caused because of the changes in the speed of light. Clear? हाँ भाई, प्रीवियस स्लाइड को क्या देखना है आपने? ये देखिए, चलिए. An object is placed at the following distances from a concave mirror of focal length 15 centimeters. Then which position of the object will produce virtual image? Virtual image कौन से में बनेगी बताइए मुझे. Virtual image कैसे बनेगी, इनमें से किस में बनेगी virtual? है ना. फोकल लेंथ 15 है, तो देख लेते, लिख लेते, बना लेते हैं यहाँ पे कि मेरे पास फोकल लेंथ है 15 और 2f है 30. 30 कैसे है भाई? 2f है, डबल एफ का, तो 15 का डबल 30. Virtual image के लिए the object has to be between these two, so that means 10 centimeters. I can write 10 centimeters will produce virtual image. Diminished real image. Real image तो यहां से कहीं भी बनेगी, but यहाँ beyond 2f होगा,
तो डिमिनिश्ड बनेगी उधर, है ना। सो बियॉन्ड 2f मतलब 30 से ज्यादा 40 है, सो 40 सेंटीमीटर। Now enlarged image. Enlarged image will be, enlarged real image will be when you put the object between these two, f and 2f. So 15, 30 के बीच में 20 आता है कहीं, 20 centimeter. Then an image of the same size, obviously the image of the same size is at 2f, which is 30 centimeters. So such an easy question. And that was in, for 2 marks in 2011. Clear है सबको? चलिए आगे चलते हैं. Now name the spherical mirror used as a shaving mirror. For shaving mirror, you need a virtual large image to be formed. Virtual large image to be formed. So what kind of mirror can produce virtual and large images? It is a concave lens. And so A ka first question is going to be concave lens. Concave mirror, sorry, lens bolo, mirror, my bad. Now remember, this is the 2 mark question, but there are so many parts, so you can write 1 word or 2 words for each. अगर एक ही पार्ट होता फिर आपने थोड़ा सा लिखना था, बट इसमें पार्ट्स ही इतने सारे तो आप थोड़ा थोड़ा लिखोगे उसमें, है ना. Rear view mirror in vehicles, rear view mirror has to show smaller image. So this should be convex mirror. Mirror लिख दो आगे उसके, mirror. Then reflectors in searchlights. And again, reflector in searchlight is concave because you want to have the light go parallel. Write any 3 differences between real and virtual images. मेरे पास एक वो है ना, ये it can be taken on a screen. Virtual cannot be taken on a screen. It is always inverted. Real images are inverted, and now this one is always erect. Now, when reflected or refracted rays actually meet at a point, then the real image is found. If they really meet at a point and you can really see that happening on a screen, that is real. But if it is all happening virtual, then it is virtual. You write it in your own words. What is meant by power of a lens? Give its SI unit. When 2 or more lenses are placed in contact, what will be their combined power? क्या बात है यार? And what is meant by power of a lens? Give its SI unit. When 2 or more lenses are placed in contact, what is will be the combined power? So power of a lens is the ability of the lens to converge or diverge. You have to know this. देखो लेंस का काम क्या है? लेंस का काम है कन्वर्ज या डाइवर्ज करना. ये कन्वर्जिंग लेंस है, नीला लेंस, और एक और लेंस है लाल लेंस. कौन सा लेंस ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है? कौन सा ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है? ये वाला, तो इसकी पावर ज्यादा है. ये कम कन्वर्ज कर रहा है, इसकी पावर कम है. ये कन्वर्ज कर रहा है फोकल लेंथ पे, ये भी फोकल लेंथ पे. ये कम कन्वर्ज कर रहा है ना. सो पावर इज 1 बाय फोकल लेंथ. जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी, जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी उतनी कम पावर होगी, और जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ज्यादा पावर होगी. इजी है ना. इट्स SI unit is diopter. When what happens when you have 2 lenses in contact? So if you have 2 lenses in contact, let's say this is a lens of +2 diopter and this is another lens of +4 diopter. So the total will be, you just add the powers, you get +6 diopters. But if one is concave, one is convex, then you draw or you add accordingly. For convex it is positive, concave is negative. So suppose ये +2 और -4 होता तो आंसर -2 हो जाता है ना. So this is how you will kind of frame your answers for 2 marks. You would say power of a lens is the ability of the lens to converge or diverge a ray of light incident on it. It is a reciprocal of the focal length of the lens, that is P is 1 by f.
The SI unit is diopter if f is measured in meters. ठीक है? अब ये है ना, बहुत कॉमन गलती होती है। मैं बार बार गलतियां इसलिए बताता हूँ कि आप ये गलतियां ना कर दो यार। बोर्ड में करते हैं, आपके सीनियर भैया दीदी करके आए गलतियां, है ना? तो दैट इज व्हाई। सो देवांश, इफ इट इज अ कॉनकेव लेंस देन इट इज नेगेटिव, यस। सो डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स ऑफ योर आंसर्स, अदरवाइज है ना मार्क्स कट जाने। So refractive index of turpentine oil, kerosene and alcohol are this. On the basis of this information, complete। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए। सो लिख लेते हैं। अल्कोहल का है टर्पेंटाइन, केरोसिन, अल्कोहल। अल्कोहल इज 1.36। सो दिस इज, एक मिनट इस पेन को पतला कर दूं थोड़ा सा। सो दिस इज हियर 1.36 एंड केरोसिन का है 1.44, 1.44 और ये है 1.47। फटाफट से लिख देते हैं यहाँ पे 1.47, 1.47, 1.44, 1.36. Now you can see the light is going from rarer to denser. It will bend towards the normal. Again, it is going from rarer to denser. It will bend again towards the normal. And on the other hand, this will be away from normal. It's going from denser to rarer, so away and then more away. Arrows बनाने बहुत जरूरी है। And अगर आप arrows नहीं बना रहे हो, then you lose marks. You will not get full marks. You have to make those arrows. A doctor has prescribed a corrective lens of power 1.5 diopters. Find the focal length of the lens. Is the prescribed lens diverging or converging? क्या कहते हुए, है ना? So find the focal length of the lens. So you can say focal length is equal to 1 by power, which is equal to 1 by 1.5, which is 2 by 3, which is equal to positive 0.6 recurring meters. And that's your answer. Is the prescribed lens diverging or converging? It is converging because it's positive. It is a convex lens. है ना? कितना easy है ये सब यार। With the help of a ray diagram, show that the formation of image of an object by concave lens when it is placed at the center of curvature. So what you would do is you देखो क्वेश्चन की गलती देखो, कॉनकेव मिरर है ना, मिरर लिखा था और मैं लेंस बनाना शुरू कर दिया मैंने। आप समझ रहे हो? ये गलती मेरे से भी हो रही है और आपसे बोर्ड में होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मेरे पास तो अभी स्ट्रेस नहीं है ना, आपके पास उस समय स्ट्रेस होगा यार, क्योंकि आपको लगेगा टाइम से खत्म करना है पेपर। So then you just draw this. So you draw, there is an object here maybe, and I'll just draw with the red color here. अब यहां से हम रेज ऑफ लाइट फेंकेंगे। सो पहली रे ऑफ लाइट गई ऐसे, मैं पैरेलल बनाना चाह रहा हूं पर वो स्टिक हो रही है, उधर जाके गई। चलो ठीक है, जो भी है ना, ऐसे ऐसे आ जाएगी। सिमिलरली आप ऐसे भेजोगे तो ऐसे आ जाएगी, और इसके नीचे ही आपकी इमेज बन जाएगी ऐसे कुछ। ओहो, ये क्या हुआ? है ना, ऐसे आपकी इमेज बन जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। And a differentiate between reflection and refraction of light, 2012 का 2 मार्क का क्वेश्चन है। So reflection is the phenomena of bouncing back of ray of light in the same medium after striking the surface. In the same medium has to be mentioned. This, on the other hand, is the phenomena of bending of light when it travels from one medium to another. So दो अलग-अलग बातें यहाँ पर हो रही हैं, आपको उनके differentiations लिखने हैं। So you really have to be comfortable in visualizing this. You don't memorize this thing, है ना? So angle of I is equal to angle of R, angle of refraction, है ना? Incidence and reflection are बराबर, but this case it is not. Here Snell's law rules. So in this case, I and R are not equal. You have to use the Snell's law to calculate the angle of refraction.
Reflection can take place from any surface, obviously any surface, even transparent surfaces do reflect. So surface can be rough, it can be smooth, it can be transparent, it can be opaque, it can be anything, it can reflect the light. But not so in the case of refraction. Refraction takes place from the transparent medium only. So refraction will only take place from the transparent medium. चलिए आगे चलते हैं. So look at this. Isn't this physics? This is physics. If you're not able to visualize physics here, then I have done a very poor job in teaching you so far. Physics. You don't look at physics in your textbooks, you look around and the beautiful physics is all around you. Now 3 mark question पे आ गए हम. So 3 mark question का पहला question says a student focused the image of a candle flame on a white screen by placing a flame at various distances from a convex lens. He noted his observations from the above table, actually below table, find the focal length of the lens without using the lens formula. इसमें मुझे दिख रहा है यार, जब 60 पर है, 20 पर है, 40 पर है, 24 पर है, ये. So one thing for sure I can say कि यहाँ पर कुछ तो दिख रहा है. मेरे को ये दिख रहा है कि ये और ये सेम लोकेशन पर इमेज बन रही है. बट सेम लोकेशन पर इमेज कब बनती है? जब इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ होते हैं? So that was a real butterfly, my dear friend, Aryan Chabra, but it was photoshopped, I agree. But even, I mean, from in my garden, when I take butterfly pictures, I do get very beautiful images of butterflies. Shilpi beta, very soon, that triangle chapter is long due. I will definitely start very soon. So now the object is at 30, image is at 30, but that 30 means 2f is 30. So focal length is 15 centimeters. You have to write centimeters because this is given in centimeter. ऊपर लिखा है. और अगर इधर मीटर लिखा हो तो आपको remember you have to know, write down meter in that case. ठीक है? चलिए. A ray of light falls normally on a face of glass slab. What are the values of angle of incidence and the angle of refraction of this ray? It falls normally. Normally जा रही है भाई. Normal का मतलब 90 degrees. So let's say there was a glass slab here. Angle of incidence 0 है. So when you apply the Snell's law, क्यों भाई क्यों हंसी आ रही catastrophic आपको? So Snell's law will say if angle of incidence is 0, angle of refraction will be 0. This is what will happen for a normal falling. What a typing mistake I made. क्या गलती कर दी भाई? 2f इजिकल टू 30, f इजिकल टू 15 सेंटीमीटर. क्या गलती कर गए भाई? हमें भी तो पता चला. Light enters from air to a medium x. Its speed in medium x becomes this much. Find the refractive index of medium x. So refractive index of medium x is speed of light in vacuum to the speed of light in medium x. So that you put 3 times 10 to the power 8 meter per second divided by 1.5 times 10 to the power 8 meter per second. Meter per second cross out. 10 to the power 8, 10 to the power 8 cross out, and ultimately you're left with the number 2. 2 की कोई unit नहीं होगी. It is a pure number. It does not have any unit. So let's proceed now. A student wants to project the image of a candle flame on a screen 60 centimeters in front of a mirror by keeping the flame at a distance of 15 centimeters from its pole. Write the type of mirror he should use. है ना? So basically उसके पास एक मिरर है तो कॉनकेव ही होगा ना जब उसको रियल इमेज बनानी है. So screen 60 centimeters. So there is a screen here. So let's say there's a screen here. और इस स्क्रीन पर उसको इमेज बनानी है ना? This is at a distance of 60 centimeter. अब बोलते हैं कि
keeping the flame at a distance of 15 centimeters from its pole. So there is a candle here at 15 centimeter. ऐसा चाहता है वो. Write the type of mirror he should use. Definitely he should use a concave mirror. Find the linear magnification of the image produced. So linear magnification तो 4 times हो जाएगा ना? Because think about it, isn't the linear magnification is equal to minus V by U? And what is V? V is minus 60. So you'll write minus sign and then another minus sign with 60 inside divided by U. U is minus 15. So magnification is equal to minus 4. क्या unit है इसकी? कोई unit नहीं है. अरे कोई बात नहीं दया, 1 सेंटीमीटर तो आगे पीछे हो जाता है, इतना तो एडजस्टमेंट हो जाता है भाई. And what is the distance between object and its image? It's 45 centimeters. Draw a ray diagram to show the formation. You will do that. And students, see how easy these questions become if you draw the diagram. जैसे ही मैंने डायग्राम बनाया मुझे सब क्लैरिटी हो गई कि ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है. I was able to find the magnification of that and I'm able to find everything that is asked here. ठीक. So इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने अपने एग्जाम में. And that is all. That is all for the PYQs today. And we'll be back with more and more of these questions. And first of all, taaliyan to banti hain because you mastered optics, that too without ratta. So again, come to this channel for free things that we are still in the process of making. Chapter ho gaya, next kya karna hai? Actually, you can take Olympiad classes also. And we are starting free Olympiad classes because many students were asking. So starting at 6 p.m. today on the English channel, and I come to that channel and you will see a class scheduled already. Today we'll talk about center of mass. Or you can take one of these paid courses. Dhruv was in one of our paid courses. He got gold medal for India as a part of the team, physics team. Similarly, Aditi and Avnish, our students, they got. है ना. अच्छा संजीव बेटा, आपको रिफ्रैक्शन का होमवर्क नहीं मिल पाया है क्या? ओहो, बनाया तो था. ठीक है, मैं भेज देता हूँ आज. ठीक है, आज भेज देता हूँ. आज मैं रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन दोनों मिक्स करके भेज देता हूँ ना. ठीक है. सो वी ऑफर ऑल द कोर्सेज फॉर डिफरेंट ओलंपियाड्स एंड आई पर्सनली टेक एनएससीपी कोर्स. है ना. सो बेसिकली एनएससीपी में वी हैव डिवाइडेड दैट इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स. कहाँ है भाई, तू इधर जा. हाँ ये है ना. सो 6 to 7:30 p.m. मंडे वेंसडे फ्राइडे क्लासेस होती है. 18 मार्च को शुरू हुआ है. कोर्स फीस इज ओनली 2000 and if you want module 1 की recording it is 500 rupees extra, but whatever price written here you get 10% discount using the links at the bottom here. हाँ प्रियांशु, तुम तो वहां हो गई सेंटर ऑफ मास में, मुझे तुम्हारा पता है. तो तुम्हें क्या करना और कौन कौन आ रहा है? So this is module 1, this is module 2, module 3, 4, 5, and currently we are in momentum, and collision is what we'll do on Monday now. So even if you have not covered these, if you have energy, you can come. You can't be joining this if you don't want to work extra hard. मैं बार बार ये कहता हूँ, ओलंपियाड स्कूल में बस उस बच्चे को एडमिशन लेना चाहिए जो प्लेज करता है कि मैंने एक्स्ट्रा हार्ड पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है. ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं. इसमें एनरोल कर लो, इसमें सब्सक्राइब कर लो. चलो बाय बाय. हाँ बाय बाय बाय.